Thakur ji. Good afternoon, everybody, and my dear friends from media. A warm welcome to you all for the IFI 2023 Curtain Raiser press conference. As you all are aware, this has been the most important film festival held under the auspices of the Ministry of Information and Broadcasting. And to brief about what is special in this edition of IFI, which will be held in Goa from November 20th to 28th, we have with us Honorable Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur ji, Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, sir, Additional Secretary, Ms. Neerja Shekhar, Joint Secretary, Mr. Pritul Kumar, who is also the Festival Director. The event flow will be like this. Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, will make his opening remarks. After that, we'll play a short film on capturing the essence of IFI. Thereafter, Honorable Minister for Information and Broadcasting, Dr. Sri Anurag Singh Thakur ji, will give his briefing on the details of IFI. I would request now Honorable Minister of State, Dr. L. Murugan, to speak and give his opening remarks, please. Respected Sri Anurag Singh Thakur ji, Honorable Minister for Information and Broadcasting, Additional Secretary, Joint Secretary, and DG PIB, friends from media, good morning to you, good afternoon to you all. It is a proud moment that every year this International Film Festival is organizing. This is 54th International Film Festival. Every year one new things are introducing. This year we are introduced for the OTT films and OTT contents and OTT serials. The award is going to given this International Film Festival at Goa. Friends, this festival is globally, participations are there, and you are aware that already our ministry has announced Satyajit Film Award to the icon Michael Douglas, and also in this festival the international section is very important this year, and the film Mela is also there. In this international film sector, The Catching Dust is the opening movie. This movie is an international movie, and also in Turkish film about dry grasses are also lined up in this. And the closing movie is Featherweight, a sports person's story, a drama of the sports persons. This is an closing cinema movie, and the juries, international juries headed by our director and actor Sri Shekhar Kapoor is leading the team, and he is working in this. Almost in this film festival this year, I already mentioned OTT's new introduction, and also this emerging sector of sunrise sector, we can tell it's a sunrise sector of VFS and animation films. For that, a special pavilion is highlighted there for the companies or the producers or directors, those who engaged in this VFX sector. They are setting up the pavilions there. In the worldwide cinema producers are coming. And in spite of, I already mentioned that Cine Mela
is a big program is organized, and the opening in the Goa, there is a cultural program is there, and this festival is every year new thing we are introduced under the dynamic leader of our minister Sri Anurag Singh ji. We attended the global festivals like Cannes, Cannes Film Festival. There we taken away something and we introduced here. So these books to the story also we are introduced. So this in these words I conclude my remarks. Thank you very much once again. Thank you. Yeah. Now we will play a short trailer on IFFI 2023, please. Over 7 decades of love and harmony. Promoting socio-cultural exchange via the silver screen. Disseminating ideas using the power of cinema. Putting Indian films on a global pedestal. Bringing home the best of world cinema. Knowledge sharing by the masters of film arts. Tapping and molding of young buds. Presenting platforms for creative collaborations. Building opportunities for creators with potential. Tech Hub for showcasing cinematic innovations. Pavilions for brands, countries and mega production houses. Fostering global recognition for filmmakers. Celebrating the madness for movies. The International Film Festival of India presents unique opportunities and incredible possibilities for young and established filmmakers to network, pitch, collaborate and experience the best from the world of cinema. The 54th International Film Festival of India. Bridging the world with cinema. IFFI, celebrating the joy of cinema. Yeah, that's a short film. Now I would request Honorable Minister to give his opening remarks, please. फ़िफ्टी-4th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ़ी गोवा के कर्टन रेजर के इस अवसर पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित MOS इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन जी, एडिशनल सेक्रेटरी नीरजा शेखर जी, प्रिंसिपल DG PIB मनीष देसाई जी, जॉइंट सेक्रेटरी पृथुल जी, उपस्थित सभी मीडिया के मेरे मित्रों, जब फिल्मों की बात होती है तो देश और दुनिया में सबसे बड़े फिल्म निर्माता के रूप में भारत का नाम आता है। और एक बात कही जाए, आज फिल्मों की दुनिया में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। ये कहा जा सकता है India's media and entertainment industry is a force to be reckoned with, ranking as the 5th largest market globally. And this market is growing with each passing year.
if you look at the average growth of the last 3 years, it stands at average growth of 20% annually. So with the highest production of films in the world, our industry stands as a beacon of innovation, creativity, reaching every corner of the country, and now cutting across the boundaries, reaching every nook and corner of the world. There is nothing regional today. If your content has the power, it can quickly become from regional to national to international. We have seen many examples recently how our films have done extremely well. Now when we talk about the international platform, after the great success of G20 presidency, where India's theme was Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे 54वें इफ़ी में भी उसी दिशा में एक कदम है, जहां पूरे विश्व की फिल्मों को एक मंच देने का अवसर यहां पर मिलता है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, दुनिया भर में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होते हैं, जहां 14 प्रेस्टिजियस फेस्टिवल्स में हमारे कांस, बर्लिन, वेनिस, टोरंटो से लेकर इफ़ी का नाम भी बहुत बड़ा है। साउथ एशिया में इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसकी धूम हर वर्ष 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होती है गोवा में। फिल्म बाजार एक बहुत बड़ा आकर्षण है, जहां पर बिजनेस करने का अवसर मिलता है। वर्ल्ड सिनेमा के अलग अलग स्वरूप यहां पर देखने को मिलते हैं। हालांकि 1952 में इफ़ी की शुरुआत हुई, आज ये बिगेस्ट फिल्म्स एंड कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ द वर्ल्ड बना है, इस तरह से पूरी दुनिया में। जब हम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ज्यूरी भी हमारी जो है वो जेरम है, कैथरीन है, हेलन है और शेखर कपूर इसके चेयरपर्सन हैं। इसी तरह से ही इफ़ी में बहुत सारी जब आपको आगे डिटेल्स दी जाएंगी तो ये कहा जा सकता है पूरे हक के साथ दैट इफ़ी हैज़ बीन ए beacon of cinematic excellence, bringing together the finest talents from both the Indian and the international films industry. इसमें जो 2-3 अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो हमारे सत्यजीत रे, जिसको फिल्म की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वर्ल्ड सिनेमा इस बार के जो विजेता हैं उसका नाम तो शायद आप सबको पता है। मैं आपको याद कराऊं, पिछले साल स्पेनिश जो हमारे फिल्म मेकर थे कार्लोस सौरा, उनको अवार्ड दिया गया। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस बार हमारे एक्टर और प्रोड्यूसर who is the shining star of world cinema and who is known for his contribution in the film industry, माइकल डगलस, उनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वर्ल्ड सिनेमा उसके लिए दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सेक्शन हमारा ऐसा जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों को यहां पर दिखाने का अवसर मिलता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बार 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है इंटरनेशनल सेक्शन में, और ये अपने आप में दिखाता है कि इफ़ी के प्रति आकर्षण कैसे दुनिया भर की फिल्मों का बड़ा है। कोविड के समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लगातार बढ़ोतरी देखी है। प्लेटफॉर्म्स भी बड़े हैं ओटीटी के, तो लोकल कंटेंट भी यहाँ पर बनना बहुत शुरू हुआ है। कई हजार घंटों का कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में अब भारत में बन रहा है। हजारों लोगों को इसमें रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं, और इस कंटेंट के माध्यम से एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। एंड इन रिस्पॉन्स टू द dynamic landscape of the entertainment and the growth of the OTT sector, which stands at close to 28% annually, we have introduced the Best Web Series OTT Award.
celebrating the outstanding content creators on OTT platforms. A total of 32 entries across 10 languages from 15 OTT platforms have it for this honor, and the winners will be given 10 lakh rupees. तो 10 लाख रुपया इनाम भी मिलेगा। इसी तरह से हमारा जो प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड है, उसमें 15 फिल्में इस कंपटीशन में भाग ले रही, और इसमें बहुत एक ऐसा कंपटीशन होता है कि लगता है कि इसको अवार्ड दें कि उसको अवार्ड दें। बहुत मुश्किल होता है चुनना भी, बहुत फियर्स कंपटीशन इसके अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर भी बेस्ट कोवेटेड जो फिल्म है, बेस्ट फिल्म अवार्ड है, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलता है, उसको 40 लाख रुपया अवार्ड दिया जाएगा। एनिमेशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एवीजीसी सेक्टर की अगर आप ग्रोथ देखोगे, देश और दुनिया में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और भारत में दुनिया भर की फिल्मों का कंटेंट क्रिएशन, पोस्ट प्रोडक्शन हो या कंटेंट नया बनाने की बात हो, सब भारत में एक बहुत बड़ा व्यापार यहाँ पर आता है। अब एक्सपेंशन हमने एनिमेशन सेक्शन का भी किया है, और इसमें भारत और भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों को भी इसमें स्थान दिया जाएगा, जहाँ पे पोलैंड की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री द पेजेंट्स, इसको भी इसमें अवसर मिलेगा। युवाओं को इसके साथ कैसे जोड़ा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहाँ देश में स्टार्टअप्स को बल दिया है, और भारत के युवाओं ने 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का आज भारत में खड़ा किया। तो फिल्म जगत में हमारे युवा पीछे ना रहें, तो देश के छोटे से छोटे गांव में भी अगर अच्छा कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई अच्छा राइटर है, कोई सिनेमाटोग्राफी में आगे आना चाहता है, कोई लिरिसिस्ट है, इन सबको अवसर मिले। तो उसके लिए हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे 75 युवाओं को, क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, उनको चुनने की शुरुआत की थी। पहले 2 वर्षों में 150 लोग चुने गए, सैकड़ों इसमें एंट्रीज आती हैं। इस साल भी 600 से ज़्यादा एंट्रीज हैं, उनमें से 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो को चुना जाएगा। तो इस साल तक कुल मिलाकर 225 ऐसे युवा हमारे पास हो जाएंगे जो भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी। इंक्लूसिविटी की, जब समावेशी होने की हम बात करते हैं, तो हर सेक्टर में बहुत हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एशियन गेम्स में पहली बार भारत ने 100 पार किया है मेडल्स में। जहां एशियन गेम्स में 100 पार हुए, तो पैरा एशियन गेम्स में भी 100 पार भारतीय खिलाड़ियों ने किया, 111 मेडल जीते। जब मैं समावेशी की बात करता हूं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, पहले कहते थे डिसेबल्ड, अब कहते हैं स्पेशली एबल्ड, पहले कहते थे विकलांग, अब कहते दिव्यांग। ये केवल शब्दों का हेरफेर नहीं, सोच बदली है। और सरकार में, भारत सरकार में आपको ये हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा इफी होगा, इसके हमारे जितने सेंटर्स हैं वो इंक्लूसिव होंगे, स्पेशली एबल्ड के लिए वहाँ पर सुविधाएं होंगी, एक्सेस होगा। और यही नहीं, अगर मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगा, पृथुल जी आपको विस्तार में बताएंगे भी इसके बारे में कि कैसे हम लोगों ने जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन का प्रावधान कुछ की जगह पे किया है, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए साइन लैंग्वेज का किया है, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसको डब करके आपको अलग अलग भाषाओं में सुनने का अवसर भी हमने इसमें दिया है। तो सरकार का जो सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबका मनोरंजन भी हमने सुनिश्चित किया है। इसमें एम्बेडेड ऑडियो डिस्क्रिप्शंस होंगी, साइन लैंग्वेजेस होंगी, और हर फैसिलिटी तक जाने के लिए आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इंडियाज ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री इज अ चैंपियन सेक्टर नाउ, ऑफर्स बाउंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर यूथ। फिल्म बाजार ये हर साल एक के बाद दूसरे वर्ष और बड़ा होता जा रहा है। आंकड़े आपको अगले प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे कि कितना बड़ा हमारा
फिल्म बाजार होता जा रहा है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में हम बहुत बल दे रहे हैं। हमने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनाउंसमेंट अपनी नई पॉलिसी इंसेंटिव की भी की थी, एवीजीसी सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं वो भी किया था, और डिज़ाइनिंग में भी आपने देखा होगा हमने बहुत बदलाव लेकर आए हैं। इसमें हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद, हमने उसकी भूमिका को भी इसमें बढ़ाया है। एक बात मित्रों मैं आप सबसे शेयर जरूर करना चाहूँगा, दुनिया में कोई देश जो नहीं कर पाया वो भारत ने किया है। मैं चंद्रयान मिशन की सफलता की बात नहीं कर रहा, वो तो किया ही है। हमने यहाँ पर जो हमारी पुरानी फिल्में हैं उनको रेस्टोरेशन का, डिजिटाइजेशन का, ये दोनों ही काम हमने किए हैं। और हम इसमें रिस्टोर्ड क्लासिक को दिखाने का भी एक बहुत बड़ा शुरुआत करने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में, देवानंद जी के जो आपने देखा होगा 100 वर्ष हुए, तो मैं एक बात कहूँगा गाइड फिल्म को भी हमने इसमें रिस्टोर किया है, हम उसको भी दिखाएंगे। ऐसे ही हकीकत से लेके 20 साल बाद, ये 20 साल बाद तो फिल्म का नाम है लेकिन उसकी रिस्टोरेशन 60 साल के बाद हुई, 1962 में आई थी, हमने रिस्टोरेशन किया है। विद्यापति से लेके श्यामची आई, ऐसा हमने बहुत सारी फिल्मों को रेस्टोरेशन, लगभग 6000 फिल्मों को, डॉक्यूमेंट्रीज को हम रिस्टोर करने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है, नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के अंतर्गत हम इसको कर रहे हैं। बहुत कम अखबारों में शायद इसके बारे में लिखा गया, लेकिन मैं इतना कहूँगा ये दुनिया भर में ना केवल सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला देश भारत है, बल्कि OTT प्लेटफॉर्म की सबसे तेजी के साथ ग्रोथ भारत में हो रही है। हमारी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ रही है। कई बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन रही है, लाखों लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रही है, और इसके साथ साथ दुनिया भर के लिए फिल्म शूटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन कंटेंट क्रिएशन का हब बन रही है। और मैं कहूं कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड आज भारत बनने जा रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या फिल्म इंडस्ट्री के लिए रहती थी, फिल्म बनाने के लिए जिन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होता था, एक मेकअप आर्टिस्ट से लेकर एक स्टोरी लिखने वाले से, डायलॉग लिखने वाले का, लिरिसिस्ट से लेके, गाने वाले से लेके, प्रोडक्शन, कोरियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, बहुत सारे प्रोड्यूसर से लेके, डायरेक्टर से लेके, अभिनेता अभिनेत्री तक, इन सब की साख दाव पर होती थी कि फिल्म कैसी चले। लेकिन चुराने वाला चंद मिनटों में चुराकर न जाने कहां कहां एग्जिबिट करता था। हमने वायदा किया था मोदी सरकार में कि इस पायरेसी के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे, और 1952 में जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट आया था उसमें बदलाव, अमेंडमेंट करने का काम हमने 2023 में किया, और अब पायरेसी करने वाले को कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा का प्रावधान किया है। पायरेसी करने वाले को 3 लाख रुपए के फाइन से लेके 5% ऑडिटेड प्रोडक्शन कॉस्ट का वसूली किया जा सकता है, जो करोड़ों रुपए तक जा सकता है। ये बहुत बड़ा कदम दुनिया भर में किसी ने उठाया तो भारत ने उठाया है। और यही नहीं, अभी हमने नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति भी पिछले कल कर दी है, जहां पर मिनिस्ट्री में भी नोडल ऑफिसर होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वहां पर भी होंगे, और रीजनल जो हमारे सेंटर्स है वहां पर भी नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी गई है। मैं इतना ही कहूंगा फिल्म जगत वालों से, आप बढ़िया से बढ़िया फिल्में बनाओ, ऑस्कर से लेकर बाकी अवार्ड भी जीतो, दुनिया का मनोरंजन भी करो, भारत में लाखों लोगों के लिए रोजगार भी खड़ा करो। पायरेसी के खिलाफ जंग में भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। बेस्ट कंटेंट क्रिएट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम लाने के लिए मोदी सरकार आपके साथ खड़ी है। एनिमेशन से लेकर विजुअल ग्राफिक्स तक, विजुअल इफेक्ट से लेकर गेमिंग और कॉमिक्स तक, नई नीति लाने से लेकर इंसेंटिव तक हम आपके साथ खड़े हैं। हम भारत को फिल्मों के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये विश्व के लिए तो है ही, भारत के लिए भी एक अवसर है अपनी नई पहचान दिखाने का।
आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Minister. Now, the festival director, Mr. Pritul Kumar, will give a short presentation on IFI 2023 and its contents. Pritulji. Respected Minister Sir, Shri Anurag Singh Thakur ji, respected Honorable Ministers of State, Shri L. Murugan Sir, Madam Nirja Shikhar, Additional Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Principal DG PIB, Manish Desai Sahab. Most of the points have been covered in the speeches of ministers, but we'll just run through the presentation, and whatever is there, the details have been given in the press brief, and after that we'll take up questions. So can you just turn the slide? So this all sir has already covered in his speech, that this is one of the FIAF 14 recognized festivals, international festivals, which are accredited by FIAF in the world. So IFI is one of them, the others being Cannes, Berlin, Venice, and it is the only one in South Asia, which is a big thing. So next. This is the glimpses from the last IFI. Last IFI in itself was one of the biggest extravaganza which happened in 2022, and the participation in terms of countries was up to 78 countries internationally had participated. The film depiction was also very, very appreciated, and we are trying to carry the beacon forward, and we are trying to make this 54th IFI also as big as the last one, even bigger than the last one. Thank you. Next one. This is the poster. The poster and the trailer which you just saw got released in the Cannes Film Festival, which for the delegation which was led by Honorable Minister of State, and there it was also endorsed by a lot of celebrities, and the campaign is going on, and I'm happy to share that NFDC and the IFI digital media handles have seen multiple times amplification because of this content. So people are appreciating it. It is reaching to the people. That is what the objective with which we are approaching. Next. As sir already mentioned, that it is 3 times we have had the international submissions, and not just in quantity, but I'll assure you that in quality also the submissions this year have been really, really good, and that is how this 198 international films, which will be showcased in 8 different packages this year. This will have 13 world premieres, 18 international premieres, 62 Asia premieres, and 89 India premieres. In all these international films, there are more than 40 films which have women directors, so that is also very good. And this all the showcasing of the international and the national cinema will be done across 4 venues in Goa, which is very close by. So the Inox Panjim, which has got 4 theaters, Manikwit's Palace, which has got 1 theater, is in the same complex. Then Inox Porvorim, which is about 10 minutes away, 4 theaters are there, and Z Square Samrat Ashok, it has got 2 theaters and just 100 meters away from the main festival venue. International jury is headed by Shekhar Kapoor, our acclaimed Indian director and actor, and then internationally Jose Luis Alcan is a very renowned Spanish cinematographer. Mr. Jerome Pellard has been the head of Cannes film market, which is the biggest film market internationally, and he's been there for many number of years. It is the last year only he retired as the film director. He has accepted to be the jury for this year in international jury for IFI. Miss Catherine Dussart is a French producer. Miss Helen Leake is also a producer from Australia. Next. Opening film is Catching Dust. This is a thriller from UK, which is done by a British filmmaker, and the star cast is international, and Erin Moriarty was in the cast of The Boys OTT series. She was very famous. She has more than 2 million followers on the internet. Jim Courtney, and we are trying that not just the director and producer are coming, but
we are also trying that the stars also get an exemption from the SAG-AFTRA strike, and they are also able to attend the festival. Next. Midfest film is going to be a celebration of Turkish drama, which is a film based on relations. And this film already was also in the Cannes competition section, and the actress of the film won the Best Actress award in Cannes also. So this is going to be there. About Dry Grasses is going to be there as the Midfest film. Closing film is the Featherweight, which is actually a truthful cinema style, which was there, is being done in truthful cinema style, which is called Cinema Verte, by an eminent director of United States, and this is going to be the closing film for the festival. Next. All the details are also given in the press brief, and other details will be found on will be uploaded on the website also after the conference. International section of films at IFFI. This festival kaleidoscope is the package in which we showcase the award-winning films of the other festivals which have happened along the year, because our festival happens in the last of the year, so towards the last of the year. So 19 films will be there, and the best films from Cannes, Venice, Sao Paulo, Rotterdam, Santa Barbara, Stockholm will be a part of it. Cinemas of the world. This showcases the various cinema from international, from countries abroad. This time we had entries from 105 countries, and we have selected 103 films to be packaged in this section. Last year, this section had about 70 films. So this year we have been able to get better and more films from more countries. There'll be a documentary montage section, because documentaries are becoming more and more important and also India's documentary also won of Oscars this year. So we are celebrating documentaries in IFFI and also in Film Bazaar. So there is a specifically curated documentage section this year from documentaries around the world. Then, as Sir said, there'll be an animation section, and The Peasants, which is a award winner film. It's going to get an India premiere here, and it's going to be part of the animation section where international and Indian films will be there. Then the UNESCO section, it'll be there, which showcase the films which follow the Gandhian motto of peace and universal brotherhood. So about 10 films will be showcased, out of which 7 will be international, 3 will be Indian. Next. Indian Panorama is a package of 45 films, 25 feature films and 20 non-feature in 26 languages. This time these films will be, and 5 mainstream films are also included in that. The opening film will be a Malayalam film, Attam, and for the non-feature section it will be Andrew's Dream, a Manipuri film. Restored Classic, as was briefed by Sir, that it is part of the NFHM project, and this has started to, the restoration films have started to come March this year, and this will be the world premiere of most of these films, which are as old as 1937. So these reels have not just been digitized, but the scratch marks, the damages, they have been restored to have the quality of 4K. So it will be a 4K international restored section, in which we will showcase 7 of NFAI's restorations, and 3 international restorations will also be a part of this package. Next. In accessible films, 2 of the films have been curated for visually impaired with embedded audio description. So, Sirf Ek Banda Kafi Hai and Shershah has been done like that. And then 83 and Bhag Milkha Bhag will have embedded sign language in the picture-in-picture in the corner, which will be for the hearing impaired. Now this multiple language dub option will be available for many Indian Panorama films, in which the film may be in any language like Hindi, but any person who does not follow that language can also watch this film in another language with the help of just one app and his mobile phone and his earphone. So the app will automatically recognize what film is playing, and then the selected audio dubbing will be played in his ears. So that way the reach will be much more. The people will get to see the film in a better way. Next.
Best OTC Series Award, already sir has covered, I think next. Masterclass and conversation sessions will be held in Kala Academy this year, which is a renovated and a refurbished auditorium which was not available for the last 2 editions of IFI, but now this will be made available this year. And there about 24 sessions have been curated, one of them being done by Michael Douglas himself also, who's going to be the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award winner, but he'll also tell about his experiences of his working in the film industry and his experiences. Next. Apart from that, there'll be red carpet and galas, the ones which were started last year. This year also, we have been able to get 12 gala premieres, including 10 of feature films and 2 exclusive web series premieres will be happening in this. And I can assure you that from master classes and red carpet galas, there'll be a lot of celebrity engagement will be there in the festival, not just national but international also will be there, with the lineup of which we'll keep releasing in the times to come up to the run-up of the festival. So that is the plan. From tomorrow, you can be rest assured to keep watching the IFI website for the releases, and we'll keep issuing the releases. This time there is a new IFI Cine Mela section which has been done in front of the festival venue, so that the people who could not be a part of the IFI as registered delegates, they can participate in the Cine Mela, where cinematic exhibitions will be there from NFI, from CBC and Netflix. And apart from that, there'll also be food, culture, art, handicrafts will be there, stalls will be there. So this is something which the local tourist and the local population will definitely look forward to, and we are expecting that people can engage more and more with IFI. Next. इसमें इतना ही था कि गोवा में जो टूरिस्ट आए होते हैं, they love fun, food, and the films will be part of it. तो सबको हमने इसमें साथ में जोड़ा है. Creative Minds of Tomorrow, this was an initiative by Sir, and then it is the 3rd edition this time, and we have made the applications very stringent this time, that we made sure that people who have some prior learning, who are actually good creative minds, so they have been able to apply, and out of 600 good applications, we have been able to select 75. So this edition will have 2 editions. Like there'll be a master classes before they begin their 48-hour challenge of filmmaking. So there'll be 2 days of master classes, engagement. Even Berlinale Talents, which is considered to be one of the best formats for talents in the world. Their festival director is also coming to take master classes, and then Sony and even Indian filmmakers, they'll be taking their master classes before they begin their challenge. And after the 48-hour challenge of the film, which is going to be made on the subject of mission life this year. And after that, they'll also get exposed to Film Bazaar and IFI for a day. And then they will go for a talent hunt, will be organized for more than 20 film producers and OTT platforms participating in that. So not just this edition, 75 Creative Minds of Tomorrow, but the last 2 editions, their resume has also been circulated, so all of them will become a part of it, the talent camp. Next. The Film Bazaar will happen, which is the business of cinema, will happen from 20th to 24th at Marriott, which is along the Festival Mile. And all these are the sections, but next. So there are some important sections I'd just like to cover. The last year, Books to Box Office had been started, so we had publishers and booksellers and authors participating in that. But this time we have curated this section also, and out of 30 selected books, finally 6 finalists will be there who will be pitching to various producers, attending producers and sales agents and people who can make the content or co-produce the content. So they'll be pitching to them so that they can turn these books into a film. Then there'll be a work in progress lag and viewing room. This time there have been double the number of submissions here also, and then we are happy that we'll be able to curate good sessions. In co-production market, we have also included 12 documentaries. Last year it was only 20 feature projects,
but this time there'll be 20 documentaries also. Knowledge series, which is like a in conversation and masterclass, which happens on the IFI. So knowledge series will have 22 curated sections over the 4 days of sessions. Then this VFX pavilion, as increasingly the films are utilizing the VFX for the purpose of cinema, and we will, because the filmmakers attend the film bazaar, so we wanted that they should get exposed to be able to explore what VFX can do to their filmmaking. So this will be a pavilion exclusively curated where the VFX providers will put up will showcase themselves, where the content makers also, like Amazon and Netflix also, they'll also put up their stalls to showcase their series which they have made, and how the VFX was utilized to create those scenes and create those effects. So the traditional way of just taking the shot apart from that, we'll also be trying to showcase the infinite possibilities which can be through VFX by creating the shot. Next. In the film bazaar, there'll be various stalls from international film commissions, and also Indian states will also be participating to tell about their filming locations, to invite people to their filming locations to shoot, and also to also be showcasing their incentives so that film tourism can take place. Apart from that, there'll also be stalls from producers, content producers, the associations who will be part of the film bazaar. Next. Last but not least, the branding and decor of all the festival venues, the IFI and the film bazaar, had been entrusted to NID Ahmedabad, which has done a very unified look, which when you reach the venue, you will find out that this year it will be a very, very integrated showcasing of the IFI and film bazaar. And there'll be star-studded opening and closing ceremony, which is on the 20th and the 28th respectively. And all the details can be viewed on the IFI Goa org website of IFI, which was launched in Cannes this year, and now it is fully functional and will be getting updated every day. Thank you, that's all. Yeah, the floor is now open for questions. We can begin. We can begin from the second row, please. Hand over the microphone here. First of all, congratulations for the festival. I'm Santosh Mehta. I am, working for writing on films from the last more than 20 years. My question is, sir, due to increasing tariff of Goa's guest houses, critics and journalists are avoid going there as it is out of their reach. Now till 17, late Shri Parrikars have always helped media, but now things have entirely got changed. What are the facilities given by PIB to media coverage? And is the central government have any plans to bring IFI back to Delhi, because we have all facilities in the City Fort Auditorium, modern facilities. So why can't we use that, sir? जहाँ तक आपके पहले सवाल का, PIB के प्रिंसिपल डीजी से बाद में मिल लें, ये आपकी मांग है. दूसरा आपकी मांग है कि क्या दिल्ली में लाया जाएगा वापस. हम इस वर्ष की बात कर रहे हैं कि इस वर्ष पहले वर्षों से बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में आयोजित होगा, जो साउथ एशिया का इकलौता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है. 3 गुना ज़्यादा फिल्में आई हैं और हमारा पूरा फोकस इसके सफल आयोजन पर है, ताकि लोग यहाँ पर गोवा में आकर अपना वो मेमोरीज लेकर जाएं जो फिल्म जगत से जुड़ी हों, और एक बड़ा आकर्षण उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है. Dinamalar. Sir, Vanakkam. Venkataraman from Dinamalar. Sir, you made a very two important points. One is that the industry is growing at the rate of 20% per annum, number one. Number two, you said that you are going to set 6,000 films, older films are going to be restoration. Out of these two, how many Tamil film industry
what is the contribution of Tamil film industry growth out of 20%? And how many Tamil films are going to be restored out of 6,000? The second part, why the film festival held only in Goa? Why not in Tamil Nadu, southern part of India, Mumbai, Kolkata? There are a lot of films are made in the states where the international tourists can come and the film producers can take part in that area. Would you like to respond to that? Why do we have the World Economic Forum in Davos? Why do we have the Cannes Film Festival in Cannes? Because when the decision is taken, it takes couple of decades to establish as a venue, as a hub for a certain program. And I'm glad to say here that International Film Festival of India has become a big name in the field of cinema. In the last 2 decades, a lot of efforts have been made to establish Goa as a center for the International Film Festival. At that time, not many comments came forward, but Manohar Parrikar ji came forward to make Goa as a hub of the International Film Festival. That is one. If in future there are certain interest shown by anyone, we could have a look at that. If anyone shows interest. You are showing interest, but Tamil Nadu government never showed interest that way. No, but they did not show interest, no. You are showing interest doesn't make much difference. Regarding the percentage of That we will give you the data. Tamil film industry has contributed a lot in the last so many decades. They are one of the finest producers of the film, great actors we have seen from the state of Tamil Nadu, and their contribution is huge in the Indian film industry. I look at the Indian film industry, Bharat ke cinema ko dekhta hu. I don't look at the regional part. I think it's the entire film industry we need to look at. As I said earlier, it is nothing regional today. With the kind of options available from dubbing to the subtext to the various languages, they've been converted through dubbing. I mean, there's a huge contribution with the use of technology. The next question, please. Go ahead, madam. हेलो सर, अनीता चौधरी बोल रही हूँ स्वदेश न्यूज़। अनीता चौधरी स्वदेश न्यूज़पेपर से बोल रही हूँ। मेरा पहला सवाल है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल फिल्मों की जो बढ़ोतरी हुई है 3 गुना हुई है। हिंदी फिल्मों में कितने का ग्रोथ आया है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस बार इस फिल्म फेस्टिवल में। दूसरा कि न्यू कमर्स जो हैं वो फिल्म मेकिंग में उनके कंटेंट और उनमें भारतीयता कहीं ज़्यादा आजकल झलक रही है, तो क्या अलग से इसके भी इंतज़ाम किए गए हैं कि न्यू कमर्स भले वो विनर्स नहीं हो लेकिन उनके फिल्मों को दर्शाया जाए इस फिल्म फेस्टिवल में? देखिए, ये जो ज्यूरी बनती है इसका काम ही ये करना है, ये मंत्रालय नहीं करता। मंत्रालय का काम ज्यूरी बनाना है और हम इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं। जो उनका निर्णय है, जो उनको अच्छा लगता है, दिखाने योग्य है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। और केवल हिंदी फिल्मों का यहाँ पर आना नहीं, यहाँ पे तो रीजनल से लेके नेशनल तक और इंटरनेशनल में भी अब तो भारतीय फिल्मों की धूम है। ये जो इंटरनेशनल के नंबर्स आए हैं उसमें भारतीय फिल्मों का भी वर्ल्ड प्रीमियर से लेके उस सब में आ रहा है। आपको कुछ ऐड करना? Yes. Anything to be added? इंडियन पैनोरमा की फिल्म्स का जो सिलेक्शन है वो हर साल 20 और 25 रहता है। इस बार भी क्योंकि इंडिया में ये फेस्टिवल सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर है, तो पहले भी लोगों को अवेयर था। इस बार थोड़ी बढ़ोतरी हुई है इंडियन फिल्मों में भी, बट इंटरनेशनली क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ी है इस फेस्टिवल की, दैट इज़ वाई इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स जो आते नहीं थे इंडिया में वो इस बार ज़्यादा आए। और बेस्ट फीचर फिल्म डायरेक्टर अवार्ड में भी 5 अंतर्राष्ट्रीय तो 2 भारतीय फिल्म डायरेक्टर भी उसमें compete कर रहे हैं। इनको 10 लाख रुपए का सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिलेगा। Sir, Ashwari from Times Now. Sir, Yes, I mean. sir, there has been a long pending demand amongst the censor board members to get, and censor plays an important role in the film industry as well, to have one censor, one nation for each and every film. Most of the regional producers or the directors have to go to their regional centers
is government thinking in any line that there should be one censorship amongst the entire country so that they should not go to their regional centers for censorships? I think this is much more useful for them to have the regional offices because they don't need to run to Mumbai for that or to one central location. So that is why these regional centers are open for the ease of doing business. So, sir, if there has been a change of the language of the film, then they have to go to Mumbai or they have to come to Delhi. So, yes, Definitely we can have a look at because the technology make it much easier today to exhibit it digitally because the key is the digital key today, not the physically you have to take the print. So that could be done. Yeah, madam, go ahead. क्रिएटिव माइंड ऑफ टुमारो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और हम लोग गवाह भी रहे हैं पिछले 2 समारोहों के कि वहाँ पर बहुत सारी प्रतिभाएं आ रही हैं. अब ये एकत्र हो गए हैं, हमें कंटेंट हब बनना है, तो क्या हम एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी विकसित करने की ओर बढ़ रहे हैं कि जो इनकी प्रतिभा है उसको समुचित स्थान मिल सके, क्योंकि फिल्मी दुनिया में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है. अगर आप देखेंगे प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने कहा कि OTT की बात करें, 5 से बढ़ के 60 OTT प्लेटफॉर्म का हो जाना अपने आप में दिखाता है कि केवल प्लेटफॉर्म नहीं बढ़ रहे, कंटेंट क्रिएटर के लिए भी अवसर बढ़ रहे हैं और हजारों घंटों का मेक इन इंडिया कंटेंट अब यहाँ पर भी और अंतर्राष्ट्रीय OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी जा रहा है. ये एक नया क्षेत्र है जहाँ पर भारत के फिल्म मेकर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को अवसर मिल रहे. ये तो हो गया OTT से लेके फिल्म एग्जीबिशन तक. इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इन सब कंटेंट क्रिएटर को अब वो जो कई बार तो फिल्म बनाने वालों से ज़्यादा ये लोग कमाते हैं. सो कंटेंट में दम है तो आपके पास कमाई के बहुत सारे अवसर हैं और एंटरटेनमेंट के भी आपके पास बहुत सारे अवसर अब मिल गए हैं. ना केवल OTT, ना केवल सिनेमा, ना केवल टेलीविज़न, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं. तो एक हम इसमें करते हैं जो क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, इनको सबसे बड़ी मदद यहाँ पर मिलती है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मास्टर क्लास में लोग वो आते हैं जिनके पास ये शायद कभी जीवन में ना पहुँच पाते, वो इन तक आते हैं. सबसे बड़ा जोड़ने का काम वो है. दूसरा, उनके वर्षों के अनुभव से इनको सीखने का अवसर मिलता है. तीसरा, इनको नेटवर्क करने का अवसर मिलता है. वो बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, एक्टर और खरीदने वाले जो लोग हैं जिनको एग्जिबिट करना होता है, उनसे भी इनको मिलने का अवसर मिलता है. तो शायद ऐसा मंच इनको दुनिया में कहीं ना मिलता हो जो यहाँ पर इफी गोवा में मिलता है. Any questions from the middle? If there are no more questions, we may conclude this press conference. I heartily thank Honorable Minister, Minister of State. आप लेफ्ट से मिडल तक तो आए, राइट तक गए ही नहीं. The officials are there. Any question? I mean, I can take any question from that side. Thank you very much, Additional Secretary and the Festival Director. And I request all the media persons to join for refreshments at the 4th floor cafeteria. Thank you very much for coming to this press conference. Thank you.